Hi everybody. Hi. So, good morning everyone. Welcome to Guide IAS. Hideshi this side. I hope you had a wonderful Christmas Eve. So, I'll be beginning with some lines. Uh, okay. Because with authority comes the responsibility, with responsibility comes the accountability, and with accountability comes the experience. Life of an IPS is not lived once. It's living every day and every moment. So, my dear friends, today we have a ball of fire with us, Miss Riti Raj, IPS officer. So, let's connect with her. We're connecting with her. Ma'am, can you please upgrade because we're not able to send you a request? Hi, everybody. So, till the time ma'am joins us, let me know what you all are doing. How's your preparation going on? Hi, everybody. To all the new viewers, welcome to Guide IAS. So, till the time ma'am joins, I'll let you know something about our organization. So currently Guide IAS is running some programs. We have a current affairs program wherein we compile all the important news and facts from various newspapers and government websites and provide at a bare minimum of rupee 1, that is rupees 365 for an year, 65% of which is donated to the needy students. I have received a message that I am not audible. Guys, please tell me if I am audible. Okay, thank you. So we also have a Telegram group, serving officers being part of it, sharing their encyclopedic knowledge with us. So in that they give their strategies they have applied to their preparations. And we also have weekly webinars which you can access at our YouTube channel.
So I think so. Let us connect with. Good morning, ma'am. Good morning, Hiteshi. Welcome to Am I Guide audible? IS, ma'am. Yes, ma'am. You're clearly audible. Thank you. So we are extremely happy to have you here with us, and this time with a video too. I know the last time there was a goof up. Yeah. Thank you so much, ma'am, for joining with us. My pleasure. So before we begin, let me run through your journey so far for the new viewers. Sure. So, guys, Miss Riti Raj is an IPS officer from Patna. She backed this prestigious position and got allotted to Telangana cadre. She's currently serving as an assault commander at Telangana. Congratulations, ma'am. Thank you. So, let's begin with the questions. Sure. Go ahead. The first one, ma'am, as you were a law student, so was UPSC a pre-planned or was it something like suddenly you aspired to be? See, generally, I've seen that, people say ki I always wanted to become this, or they have an ambition since they were kids. I was not that type. I never knew what I really wanted to do. So when I took law, I was hopeful ki, now I'll secure, I'm doing my graduation, I'll secure a job, I'll be good. But once I started doing the internships, I realized ki that's not what I want to do with the rest of my life. Sitting behind a screen and working on contracts and things like that, all that a law firm does, because they pay you really well, but somehow I realized that my aptitude does not lie in there. So in my fourth year, after I had gotten my placement, after my job was secure, then I realized, okay, this is not something I can see myself doing. So then I started preparation in my final year. And then also I did not have proper guidance. So I joined Vajiram and in August, around August. And somehow I tried preparing, but I couldn't clear the prelims that time. So then I understood everything properly and then I did it in my second attempt. Okay, thank you, ma'am. So next one, ma'am, like IPS involves a special training, needs physical fitness. So as a lady, was it difficult for you? Because at the end of day, it's a general tendency, and somehow it's true that जो girls होती हैं, they are a bit soft because initially they are not that involved in sports. So how was Hmm. it? See, more than being a girl, as you said, I was a girl who was not at all, associated with any kind of sports activities. I used to play a little bit of badminton until class seventh, but after that, nothing, absolutely nothing. So I was a complete couch potato, just studying, nothing else. When I came to NPA, my life was in for a very topsy-turvy ride. Because in NPA, they actually train you. Training means that you become a different person. They actually chisel you. So NPA training was extremely difficult for me. Extremely, extremely difficult. I had a fracture also, and I spent a lot of my time in the hospital, but I was able to finish it. And I passed all my exams with good marks, and all because I had a very good support system. Like things can be really difficult in life, but if your mentors, if your guides are good and supportive, if you have good friends around you, then it becomes a little easier. You just have to keep it in mind that I can't quit. There is no option of quitting. I might be bad at it, but I have to keep doing it. Like initially, they started with making us run, cycling, and heavy physical activities. So I was not good at it, but I knew that I have to finish it. So I have to keep trying a little bit more, a little bit more. So you just have to have that motivation, because if your why is very strong, the other factors generally don't take precedence over it, because I just knew that this is what I want to do, this is what I have chosen for myself. So when it is your own decision, you have that sense of strength within you. And it is actually, people think that एक बार exam pass कर लिया, life is very easy and everything. No, definitely not. If you're going for IPS, it becomes difficult in those 2 years of training. But it's just that you have to learn to, be mediocre at something, and it is okay to be mediocre at that, and constantly the ustads who were there, who would guide us, they were really supportive. So that helped me a lot.
but it was not Okay, easy. ma'am. Not at all. Yeah, It's the I most difficult understand. thing I've ever done. So hard work paid you really well. Definitely, because it instills a lot of confidence in you. For Yeah. example, right now, it's not like, I won't get tired if I have to do a physical activity. Definitely, I'll get very tired, but I won't give up. So, like all our batchmates, the way we have been trained, it's not like we are very different from the others. We also get tired and we want to quit, but it's just that we don't. That is the confidence because physical activity is more about your mental strength. So if you're mentally strong, because I had seen there were so many of my batchmates who were actually physically very unfit, very heavy, and it was difficult for them to do everything, but they did not quit. And they actually passed out with flying colors. So it's Thank you, all ma'am. okay. Yeah. So the next one, when you see your friends working in corporate sector, with a proper schedule and all fixed timings, but in comparison, when you see yourself, like you are on a job where there's no specific timings, in fact, there are midnight duties. So how do you feel? Like कभी ऐसा thought आया हो कि यार law में कर लेती? Actually, if you think about law, the nature of the job in the law firms is actually not that good. They also don't have fixed timings because my friends who actually joined and who were continuing, they had to work for very long hours, very regular timings. Because these days, if you see a profession, be it a lawyer or a doctor, and even in software companies, these days they don't have good timings. है ना? So even if you choose those fields, you really have to work very hard, especially if you want to climb up the ladder. You have to continuously, try to prove yourself and prove your credibility. Yeah. So the only reason why I never looked back on my decision was because I knew that I would have had to work equally hard there. But here, when I'm working that hard, I'm actually able to make a difference. For example, because policing, that's why it attracted me, because everything that you do as part of your job, it's a service to the people. Just by doing your job, you will be making lives of so many people so much easier. Yeah. So I made my calculation like this, that anyway, either way, I have to work hard, be it law firm or here. So why not choose a place where I will derive satisfaction out of it? And see, midnight duties and all are all there, and they are a part of the profession. You make that deal. If you are accepting, if you want to come into it, you have to accept everything that comes along with it. Just like you have Yeah. perks of being an officer, you have the responsibilities as well. So it's just something you sign up for. And रो के करने से better है हंस के करना. So that's what True. we put it in. When the job demands, you go. Yeah. Thank you, ma'am. The next one, like we have seen कि पुलिस का एक particular notion set है. The way we see in movies कि जाओ पकड़ो मारो जेल में फेंक दो बस यही होता है. So हाँ. how does it matter, like ground reality and expectations, how they vary? See, ground reality is actually quite different. What's depicted in the movies is something of, the colonial policing. We haven't yet come out of it completely, but still today policing involves a lot of management. You have to do your manpower management. You have to manage all the stakeholders of the society, because as a police, your prime responsibility is to ensure law and order. So, for example, I can tell you about Telangana. Telangana, the crime rate is substantially lesser in comparison to the other states. So instead of firefighting, कि crime हो गया, murder हो गया, अब जाके उसको solve करना है, Telangana, there's a lot of preventive policing. Okay, so you try to nip the issue in the bud. So therein, it involves a lot of management. You have to be aware of what's happening in the society, all the stakeholders, for example, the politicians, businessmen, residents, and all the different age groups, college students, school students, elderly. There are a lot of categories. So, as a police officer, especially as an IPS officer, you need to know the society. You need to understand the expectation of the people. So, for example, in Telangana, the expectation is, कि मेरे घर में कोई problem है तो police solve कर देगी. That is the level where we have reached. इतना ज़्यादा, because there's something like Dial 100 and a lot of specialized teams like She Team and all. So people know कि the police will be there when they need help. So what, like in my field work, what I've experienced is there is a lot of manpower management, because there is always a dearth of resources. Okay, I have only 60 people. I have only this much money. And how do I, get everything done? How do I make all the police stations function? So you need to be creative about it. You need to manage a lot, manage your time also,
and manage your people also. Then you have to make sure that you have good relations with all the stakeholders. So it involves a lot of negotiation and counseling. वो चोर को पकड़ के पीटना, that is literally like 1% of your job. 90% I would say is a lot of counseling, so that the problems are settled when they are in the initial stage and they don't build up a lot. So that is how it has changed. It's more of management and cooperation, coordination. Okay, ma'am. So the next one, like there are cases where you have to hold the nerve of the people, and so for that you have to communicate with them. And at times you find कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते तक नहीं है Hmm. और आपको उनको एड्रेस करना होता है. तो how do you tackle that See, situation particularly? the best way to deal with those situations is to let them speak. ठीक है? If somebody is very angry and very annoyed and they think that police is not doing their job, the best is to let them speak and you listen to them as patiently as possible. Because once they see that they are being heard, that somebody is acknowledging their concerns, वो automatically उनका anger level down हो जाएगा. And within a matter of 15-20 minutes, temperature down हो जाता है and then you can speak what you want to. So generally what we do is ना कि अगर for example if a crowd is coming in this and that, generally we know कि who are the influencers in that group and who are the main people. So we generally try to pick them up and उनको आराम से बिठा के बुला के like because it will deal it will differentiate, it will be different in different situations. So कुछ situation में हम ऐसा करते हैं कि उनको एक 3-4 लोग को आराम से उठा के स्टेशन पे लाके बिठा के अच्छे से बात करते हैं, चाय वाय पिला के ताकि उनका भी कम हो जाए और उनकी बात हम पूरी सुने, फिर हम रिप्लाई करते हैं. तो कुछ सिचुएशंस में आप ये कर सकते हो. कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि आपको इमीडिएट एकदम एक्शन लेना होता है, तो उसमें भी यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आपकी तरफ से यूज ऑफ फोर्स ना हो. एट वर्स्ट व्हाट यू कैन डू इज शो ऑफ फोर्स कि हाँ आपने अपनी एक बटालियन लाके खड़ा कर दी और उसके बाद आप बात कर रहे हो, ताकि सामने वाला भी समझ जाए कि हाँ द मैटर इज सीरियस एंड देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी कॉम्प्रोमाइज. सो डिफरेंट तरीके से होता है. एंड रिजल्ट यही फोकस करना होता है हमें कि हाथ से बाहर नहीं जाए बात और जितना हो सके हमें फोर्स यूज करने की नौबत ना आए. तो उसमें फिर आपका पेशेंस बहुत काम आता है, आपके लिसनिंग स्किल्स काम आते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिसनिंग, नॉट जस्ट स्पीकिंग व्हाट यू वांट टू. तो दैट वे वी मैनेज इट. Thank you, ma'am. So the next one is from our audience, that this job includes political pressure too, and at times your personal rationality varies with political. So how do you break that tie between the both? See, there are two things actually. So generally people think यार political pressure होता है आप कुछ काम नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. That's not how it works. Because especially if I can take the example of Telangana, यहाँ पे उतना interference नहीं होता. And the thing is, see, you have to understand, पुलिस के पास भी बहुत बर्डन है ना, रिसोर्सेस उतने नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ काम प्रायोरिटी पे होगा, कुछ काम इग्नोर हो जाएगा, है ना, निग्लेक्ट हो जाएगा. अब पॉलिटिशियंस का क्या है, दैट दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. अगर लोग आके उनको कंप्लेन कर रहे हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके ऊपर चिल्लाएं. आपको वो बोलेंगे कि ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, आपको ये काम करना है या इस तरह से करना है, बिकॉज उनके भी अपने स्टेक होल्डर्स हैं, उनका अपना देयर आर सर्टेन पीपल हु फॉलो देम, तो उनको उनका ख्याल रखना है. So that's why, like, what we are taught is कि if any politician approaches you, you have to be very respectful, be as polite as possible. And the only thing is, compromise where you can. अगर आपको लगता है कि ये उतनी बड़ी चीज नहीं है ना, यहाँ पे आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके दोनों पार्टीज को जस्टिस दिला सकते हैं, तो वहां पे करो. बहुत ज्यादा रिजिड होने से जनरली काम नहीं होता है. And you end up ruining your relations with the stakeholders also. That should not be done, because आपको समझना पड़ेगा कि you have to be a part of the system and make the system work for the people. It doesn't help if main actors of the system are not, on good terms with each other. तो इसलिए आपको लोगों सबके बना के रखना होता है. एंड पॉलिटिशियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरली हमें लगता है कि नहीं पॉलिटिशियन को तो कुछ नहीं आता, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिशियंस डील विद ऑलमोस्ट hundreds and thousands of people on a daily weekly basis. एंड लोगों से, इतने तरह के लोगों से वो डील करते हैं, उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस काफी हाई रहता है. यू कैन नॉट इग्नोर दैट. ठीक है. सो इफ दे आर सेइंग समथिंग, यू हैव टू बी वेरी रिसेप्टिव एंड वेरी पोलाइट. And at the end of the day, you have to understand कि हाँ, where I can compromise, where I cannot. And if you cannot,
even then, ना बोलने का भी एक तरीका होता है. You have to be as respectful as possible, according to the situation, and communicate that to the politician in case you feel कि हाँ उनकी तरफ से ज्यादा pressure आ रहा है. But you have to show that sense of maturity. Yeah. So basically, you have to understand the situation and work accordingly. Exactly. You have to work accordingly. And always one thing, in policing, you cannot afford to be rude to people. You Yeah. can't. Be it a normal person, be it a politician, be it anyone. You cannot. Because आपको सबके साथ बना के रखना है so that you can, take their help when you have to resolve a law and order situation. Thank you, ma'am. The next one, being an IPS officer, your duty involves crime detection and crime prevention as well. But at the time is changing, crimes are also increasing, numerous, and the reasons are changing. For example, at times, like crime is committed to earn the livelihood. There are like चोरी करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है. So how do you manage that situation? How do you curb the crime in that? See, generally in those situations, when you see that the accused is actually, coming from desperation, कि उनके पास, the example that you said. So generally what we try to do is कि if we detect that, we, ensure that whatever material has been stolen is given back to the victim. But इनके साथ भी, because see, filing a case and registering a case and court में जाने से हमेशा problems नहीं solve होते हैं. ना ही विक्टिम को कोई जस्टिस मिलेगा, ना ही, और अक्यूज तो बेचारा परेशान हो गए. तो अगर आपको पता है कि इट इज अ जेन्युइन केस ऑफ डेस्परेशन एंड कोई हीनस क्राइम नहीं है ना, छोटी मोटी कोई चोरी है, तो उसमें वी ट्राई टू एज मच एज पॉसिबल. पुलिस का हमेशा एनजीओ से बहुत रिलेशन बना के रखते हैं. वी आइडेंटिफाई गुड एनजीओज हु आर ऑलवेज वर्किंग फॉर द डेस्टिट्यूट और द पुअर और एनी पर्टिकुलर फील्ड. सो वी ऑलवेज ट्राई टू गेट इन टच विद देम कि यार आप इनको कोई ऑल्टरनेट लाइवलीहुड कुछ करा सकते हो या नहीं. So, for example, the area where I was working, there was this institution which was working with these elderly people and destitutes who were found on the streets or anyone. तो वो उनको कुछ alternative livelihood provide करते थे. तो we would try to get them in touch with them. But again, you have to understand कि ये सब हम तभी कर सकते हैं जब कोई छोटी मोटी theft है और जहाँ पे वो सामान हम वापस victim को दे सकते हैं. But जहाँ पे ये सब नहीं होता है तो फिर you have to, follow the course of law. You cannot compromise on that. Okay, ma'am. Next, ma'am, like we have already said that your job is 24/7. In fact, कोई weekend भी नहीं available होता. So how do you find time for yourself at the end of day? What you want. So, even if you ask a school student, they'll say, यार हमारे पास तो time नहीं है. Time किसी के पास नहीं होता. You have to make time for yourself. तो यहाँ पे भी क्या है? So throughout a training, like the way we are trained, we generally, like every minute is accounted for. कि हाँ अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है. तो we don't wait कि हाँ यार मुझे आराम से 2 घंटे मिलेंगे तो मैं रिलैक्स करूंगा. बीच में 5-10 मिनट भी मिल गए, you do something to de-stress yourself. ठीक है. So you should always know कि हाँ what are the things that make you happy or what are the things that you're interested in. You should always have a hobby. For example, my hobby is reading. So I won't wait कि हाँ मुझे आराम से 1-2 घंटे मिलेंगे तो मैं आराम से बैठ के अपनी कोई नॉवल पढ़ूंगी. नहीं, मुझे बीच में 10-15 मिनट भी मिलते हैं, मैं किंडल निकाल के 5-10 पेज पढ़ लेती हूँ. Just so that I'm upbeat. I'm not एकदम down and out and completely exhausted. And ऐसा भी नहीं है कि इतना ज्यादा बिजी होता है. Sometimes some of the work can be done via phone also, because जैसे मैंने कहा कि काफी coordination and management का भी काम होता है, तो फोन से भी काम हो जाता है. एंड यू कैन रिलैक्स एट होम. इट्स नॉट लाइक कंटिन्यूअसली. हो सकता है कि कंटिन्यूअसली 2 weeks ऐसे आएंगे कि यू डोंट गेट एनी मोमेंट योर सेल्फ. बट देन फिर वो टाइम भी ऐसे निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता काम करते करते. तो टाइम कहीं ना कहीं से मिल जाता है, या तो आप निकाल लेते हो एंड यू चूज कि हाँ आपको सोने में ज्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है, गाने सुनने से डिस्ट्रेसिंग होता है, नॉवल पढ़ने से होता है, फ्रेंड से बात करने से होता है, जो भी होता है. यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर इट and you do that. Thank you, ma'am. So the next one, can you please share with us some perks of an IPS officer? Perks of an IPS officer. आपका confidence काफी high हो जाता है, because like everything that you do throughout the training, it really makes you feel यार कि अब कर लेंगे.
Even if I don't succeed at something, I'll definitely be able to try it and do it. And दूसरे हैं, definitely, there is a lot of prestige in the society. If people hear that you're an IPS officer, they immediately, they have that shine in their eyes and they treat you with that respect. So that respect and prestige in the society is something very big, which people really value. And, even I value, I don't think there is somebody who would not value that. So that Okay, respect ma'am. is very good. Ma'am, one thing you enjoy the most being an IPS officer? Hmm. Can you please tell us? Anyone? Sorry, I didn't get your question right. Like you said, you were discussing the perks with us, respect and all that. So Hmm. we're asking that can you please tell us just the one thing you enjoy the most being an IPS officer? Yeah, the best thing is when you see the smile on people's faces when you're able to resolve their problems. They're just so grateful. People actually are, because वो इतने परेशान रहते हैं, कोई ना कोई इशू में काफी टाइम से भाग रहे होते हैं, और आप थोड़ा सा उनकी हेल्प कर दो, and the smile on their faces, that is the best thing. And the Thank you, respect, ma'am. definitely. Yeah. So we also have a question that how did you prepare for your optional? And please share with us the strategy. See, my optional was law because I was doing my graduation in law, so I chose that. In preparation for optional, what's important is you identify your resources. Your resources have to be very specific. You read the syllabus properly first, and uske according you identify, all the books that you need. And don't identify too many books. Have a few books and read them, repetitively. Instead of doing 10 books once, you do 2 books only, five times, because repetition is the key. And optional mein again the thing is ki you have to be very good at your answer writing, because again in mains, optional, everything, it does not matter what you have studied, it does not matter how hard you have worked. What matters is, are you able to present that knowledge on the paper? Because at the end of the day, the examiner is going to check you. So that is important. How are you able to write? So I would suggest, because mains are already, just 10 days ahead Nearby. only. So you really have to, write as much as possible. हो सकता है, and don't wait for the syllabus to get over before you start practicing answer writing. Syllabus कभी खत्म नहीं होता यूपीएससी में. Every day new चीज आएंगी. You cannot afford to keep chasing that. You have to concretize whatever you have read. So answer writing becomes very important in optional. एंड बिकॉज वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर लिमिट्स कि हाँ ये सिलेबस है, इसको मेरे को टॉपिक को यहाँ से पढ़ना है, उसके बाद डोंट मेक चेंजेस टू इट. मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एंड डोंट मेक मोर चेंजेस टू इट. कि हाँ 10 लोगों से बात कर रहे हैं, सबके अकॉर्डिंग अपना अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, नहीं. आइडेंटिफाई द वे यू स्टडी, आइडेंटिफाई व्हाट सूट्स यू. हो सकता है एक ही सब्जेक्ट की 3-4 किताबें होंगी, तो वो किताब मत पढ़ो जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ो जो चारों बुक एक बार देख के कंपेयर करो, और फिर जो तुम्हें बुक सही लगती है उस बुक से पढ़ो. बिकॉज नॉलेज सब में सेम है, डिलीवरी स्टाइल डिफरेंट है, तो जो आपको सूट कर रहा है उससे पढ़ने का होता है. एंड आंसर राइटिंग इज वेरी 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 क्रूशल. द मोर यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, द बेटर इट विल बी इन द एग्जाम. बिकॉज क्या क्वेश्चन देख के लगता है कि यार इसका आंसर आता है, कर लेंगे, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यही समझ नहीं आता कि आंसर स्टार्ट कैसे करें, वहीं पे 2 मिनट चला जाता है. एंड यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, बिकॉज 20 क्वेश्चंस रहेंगे, यू कैन हार्डली गिव 6 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन, बिकॉज आपको रिविजन के लिए भी थोड़ा रखना पड़ता है टाइम. तो उसमें बहुत क्रूशियल है कि द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू स्टार्ट राइटिंग. तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप हैबिचुएट हो जाते हो कि हाँ यार इस तरह का क्वेश्चन है तो इस तरह से एटलीस्ट स्टार्ट कर देंगे, एंड देन फर्दर यू कैन राइट द कंटेंट. Thank you, ma'am. Ma'am, as like you said, mains is nearby. So, any last minute tips you want to give? And also, please share with us the format of essay writing. According to you, what is more beneficial? सी लास्ट मिनट टिप्स तो मैं यही बोलूँ कि यार देखो, जितना पढ़ना था पढ़ लिया है ना. ज्यादा स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है. तो आपने जितना पढ़ लिया है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, है ना. कॉन्फिडेंस इज की, कॉन्फिडेंस इज वेरी क्रूशियल. सो कॉन्फिडेंस आपका अगर रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, नॉर्मली कॉन्फिडेंट रहना है, तो उससे चीजें आपको एग्जाम में लिखते वक्त ना याद भी आएंगी.
अगर आप नर्वस हो जाओगे, नर्वस होने से सिर्फ और सिर्फ लॉस है। एक साइकिल हो जाता है, आप नर्वस हो गए, चीजें याद नहीं आएंगी, लिखोगे नहीं, उससे और डर बढ़ेगा, और भूलोगे, और नहीं लिख पाओगे। तो कॉन्फिडेंस, अपने अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, है ना। और अभी जितने दिन बचे हैं, ट्राई टू रिवाइज, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करके स्पेंड 80% ऑफ योर टाइम। अब तो काफी टाइम क्लोज आ गया है, तो स्पेंड 80% ऑफ द टाइम राइटिंग। ज्यादा टाइम नहीं लगता है लिखने में, है ना। ये ऐसा नहीं करना है कि यार मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। अरे 5 मिनट रिवाइज करके उसको राइटिंग में कन्वर्ट करो, वो आपको और कॉन्फिडेंस देगा। एंड हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने आप को एग्जॉस्ट कर देना, बिकॉज एग्जाम के पहले यू हैव टू बी फ्रेश। तो मेक श्योर कि हाँ, आप अपने फैमिली से अच्छे से बात कर रहे हो, फ्रेंड्स से बात कर रहे हो, थोड़ा सा रोज 1 घंटा थोड़ा डी स्ट्रेस हो रहे हो, डूइंग समथिंग दैट यू लाइक, मे बी वॉचिंग अ मूवी, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, वट एवर। अपने माइंड का ख्याल रखना है। जितनी मेहनत करनी थी, पढ़ना था, पढ़ लिया, अब माइंड का ख्याल रखना है। माइंड को बिल्कुल ही प्रोडक्टिव रखना है। उसको थका हुआ नहीं होना चाहिए, उसको सैड नहीं होना चाहिए, उसको एंशियस नहीं होना चाहिए। जिससे बात करके अच्छा लगता है, बात करो। एंड हाँ, अभी स्पेशली अगले 15 दिन में, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता, डोंट टॉक टू पीपल हु आर नेगेटिव। ऐसे लोगों से बात मत करो जो तुम्हें बार बार बोलेंगे, अच्छा यार अगर मेंस में नहीं होता है तो प्लान बी का सोचना पड़ेगा। अभी प्लान बी का नहीं सोचना है ना। अभी जितनी मेहनत की है उसको फ्रैक्टिफाई करना है। तो नेगेटिव लोगों से एकदम ही दूरी बना के रखनी है, बाद में बात कर लेना, बोलना अभी बिजी है। नाउ सेकेंड थिंग इज, जो आपने बोला ऐसे का, तो सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मैं ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम। तो द फर्स्ट टाइम आई एवर रोट एन ऐसे वाज कि कल ऐसे का एग्जाम सुबह है और आज दोपहर दिन में मैंने अपना फर्स्ट ऐसे लिखा है। मैंने कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं किया था। सो इट वॉज ओनली माई लक कि मुझे ऐसे में मार्क्स ढंग के आ गए थे, 150। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे की प्रैक्टिस, अगर आप 3-4 ऐसे भी लिख लेते हो और अपने पेयर से कंपेयर कर लेते हो, इट कैन बी वेरी फ्रूटफुल। ऐसे का एक ही बात ध्यान में रखना, थिंक लाइक यू आर रीडिंग अ स्टोरी। ऐसे के हर ऐसे पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है, तो पैराग्राफ्स में एक फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिस्कनेक्टेड है। जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा होगा ऐसे का, इट शुड टेल द एग्जामिनर कि हाँ भाई, ये टॉपिक है, ये बंदा टॉपिक को समझ रहा है और टॉपिक के बारे में ये सारी चीजें लिखने वाला है। सिर्फ पैराग्राफ फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ के ही एग्जामिनर को ये समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू राइट अबाउट। नाउ उसके बाद फिर क्या है कि जो पैराग्राफ्स आपके होंगे, जो एक पैराग्राफ का लास्ट लाइन है और सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है, उसके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर को ऐसा ना लगे पढ़ के, अच्छा ये तो अभी इस बारे में बात कर रहा था, अब यहाँ पे कैसे जंप कर गया। सो दैट कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट। जैसे जनरली क्या होता है कि हम चीजों का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये सारा अ, मतलब ये सारी उसके बारे में हम नैरेटिव्स लिखने लगते हैं। तो अगर आप मान लो पॉलिटिकल लिख रहे हो, उसके बाद आपको सोशल पे जाना है, तो पॉलिटिकल वाले पैराग्राफ के लास्ट लाइन में ही आप इस तरह से लिख सकते हो कि जस्ट लाइक दीज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, दिस आइडिया हैज सम सोशल मैनिफेस्टेशंस एज वेल। और फिर सेकेंड पैराग्राफ में वो सोशल वाला शुरू कर दिया। तो इस तरह से कुछ तरीके करके आप, बिकॉज आप जब लिखना प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। खुद का ऐसे लिख के खुद बार बार पढ़ो, देखो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। फिर बहुत लोग करते हैं कि कोट्स वगैरह पढ़ते हैं, कोट्स याद रखते हैं। तो यार मेरे से कभी हुआ नहीं, ठीक है। मैं कोट्स पढ़ती थी बट मुझे याद नहीं होते थे। तो मैंने ऐसे में मूवी के डायलॉग्स लिखे थे, ठीक है। जस्ट लाइक कोट्स कैन बी इंस्पायरिंग, कुछ मूवी के भी डायलॉग्स ऐसे होते हैं विच कैन बी रियली इंस्पायरिंग। तो उससे में आपको जो याद आ रहा है, समथिंग दैट कनेक्ट्स विद योर टॉपिक, आप लिखो, ठीक है। बिकॉज थिंक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एन एग्जामिनर, वेदर यू आर राइटिंग अ मेंस का आंसर, वेदर यू आर राइटिंग एन ऐसे, कि भाई मेरा प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, कीवर्ड्स दिखने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को आंसर ढूंढना ना पड़े। Examiner shouldn't have the burden of finding the answer, क्योंकि he is getting paid to check every paper. You have to keep that in mind. He won't spend a lot of time in finding कि अच्छा नहीं देखते हैं, शायद बच्चे को आगे कुछ पता होगा, नहीं, he won't do that. तो you have to make your answer very apparent and read all your essays that you write, because अगर आज आपने लिखा है और कल आप पढ़ोगे, definitely you yourself will be able to say कि यार इसमें I can improve this, इसमें I can improve that. That was a That is brilliant what I answer, have to ma'am. say.
Thank Thank you. you. So, ma'am, as you are an inspiration to many, especially the girls, so any parting message you would like to give our viewers? Oh, girls, especially, I would want to say that, never stop yourself from dreaming. Never, ever, ever. Don't let anybody around you tell you what you can do, what you can't do. It's all you. It's always you. If you set your mind to something, you will definitely, definitely achieve it. अगर आप में वो confidence होना चाहिए, वो जिद होनी चाहिए कि यार करना तो है. And one thing I would want to say is कि having a career, being financially independent is extremely crucial these days. If you want your opinions to be heard, if you want to be respected, you have to earn your money. You have to. Because जहाँ आप उस position में आ जाते हो where, you have to ask for money from maybe your dad, maybe your husband, maybe your brother, anyone. So it automatically puts you, in a position of dependence. So try to avoid that. That's why I always tell everyone कि यार life में जितनी मस्ती करनी है करो, but make sure you have a career. That is very important. Financial independence आपका एक बार हो जाएगा, फिर काफी लोग आपको काफी चीजें नहीं बोलेंगे, है ना. जैसे आज मुझे कोई नहीं बोलता कि बेटा ऐसे कपड़े पहनो या इससे मिलो उससे मत मिलो, ये बात करो वो बात करो. तो फॉर्चुनेटली मेरे घर में ऐसा कभी एनवायरमेंट था भी नहीं, एंड आई हैव ऑलवेज बीन गिवन अ वेरी फ्री हैंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर आई वांट टू डू. बट मैंने देखा है बाकी घरों में ऐसा होता है. मैं अपने स्कूल में जाके बच्चों से बात करती थी तो वो मुझे बोलते थे, लड़कियां स्पेशली बोलती थी. तो प्रॉब्लम है कि अगर आपके घर में भी आपके ऊपर प्रेशर हो रहा है कि नहीं आपको ये स्ट्रीम चूज करना है या आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, डोंट फाइट योर पेरेंट्स. ठीक है, डोंट फाइट योर रिलेटिव्स. दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड योर एनर्जी. बी एज पोलाइट एज पॉसिबल, है ना, एंड जस्ट होल्ड योर ग्राउंड. अगर आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, कन्विंस योर पेरेंट्स, है ना. आप इतना एफर्ट दिखाओ उस फील्ड में और इतना टैलेंट दिखाओ उस फील्ड में कि आपके पेरेंट्स को आप पे भरोसा हो, है ना, कि हाँ यार बच्चे को चांस देंगे ना तो ये कर सकता है. एंड ट्राई टू टॉक टू पीपल हु आर डूइंग गुड इन दैट फील्ड ऑलरेडी. ठीक है, उनसे बात करके आपको और आइडियाज आएंगे, सो दैट आप अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स का तो छोड़ ही दो, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाओगे. तो बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम लड़ जाते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट और फिर वी अबैंडन आवर प्लान्स कि यार इट्स नॉट वर्थ इट. नहीं, you have to dream and you have to achieve your dreams. Nothing will give you as much confidence as, than that. Yeah. And never stop yourself from anything. There's nothing you can't do. Thank you, ma'am. That was truly an honest answer. So, with this, we come to the end of our session. So, thank you so much, ma'am, for sharing with us your valuable insights, pitching ideas, and real and lively experiences of being an IPS. The life actually. So, a big thank you. We're also grateful to our audience for being there with us. Thank you so much for joining. So, thank you, ma'am. Wishing you all the very best for the life ahead. Thank you so much and giving me this Thank you. opportunity. And I Yes, just ma'am, want it's to a wish all the pleasure. best to all the people who are appearing for mains. Just keep your head straight. Be confident about the hard work you've done. That's all. Don't compare yourself with anyone. Thank you so much, ma'am. Have a nice day. Thank you. You too. Thank you, ma'am.